वेलकम टू एजीपीजी स्टडी। लखनऊ यूनिवर्सिटी के बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर की प्रैक्टिकल फाइल कंप्रीहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश। सो लेट स्टार्ट। एक्सपेरिमेंट फर्स्ट। ऑब्जेक्टिव। इंट्रोडक्शन टू फोनेटिक्स। फोनेटिक्स एक सिस्टमैटिक स्टडी है जिसमें कि हम स्पीच साउंड्स प्रोडक्शन ऑडिशन एंड परसेप्शन को स्टडी करते हैं सिस्टमैटिकली, and it is the branch of linguistic means language that deal with the speech sound and their combination description and representation by written symbols। मीन्स इसमें कैसे साउंड को कैसे प्रोड्यूस करना है और क्या इसके रिटर्न सिंबल्स हैं, इन सब का कॉम्बिनेशन रहता है, कॉम्बिनेशन और रिप्रेजेंटेशन रहता है। इट इज़ द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ स्पीच साउंड ऑफ लैंग्वेजेस फोनेटिक्स एंड कैन डील विथ द स्पीच साउंड ऑफ एनी लैंग्वेज। And important point is English is not a phonetic language. Hindi is a phonetic language because in this language letters is equal to sound are equal. So Hindi is a phonetic language, and in English language letters are less than sounds. So English is a non-phonetic language. Then speech sounds. In English there are 26 letters. इन इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं बट 44 साउंड्स होते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था, इसमें इंग्लिश नॉन फोनेटिक लैंग्वेज क्योंकि इसमें साउंड्स ज़्यादा हैं लेटर्स कम हैं। इसलिए नॉन फोनेटिक लैंग्वेज है जो कि डिवाइडेड है टू कैटेगरीज में, वाउल एंड कॉन्सोनेंट। All these are represented by specific symbol, the source of symbols, the International Phonetic Alphabet, a system transcription which attempt to represent each sound human speech using simple letters हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में 44 साउंड्स हैं, तो लेटर इज लेस देन साउंड। इस वजह से इंग्लिश नॉन फोनेटिक लैंग्वेज है और ये डिवाइडेड है टू मेन कैटेगरीज में, 20 वाउल्स वाउल्स 12 मोनोडिप्थोंग्स एंड 8 डिप्थोंग्स में डिवाइड है, एंड 24 कॉन्सोनेंट। देन वाउल्स। A vowel sound is unobstructed in articulation. Articulation means a person who puts forward or express an idea. जो भी हम आइडिया और जो भी आइडिया जो भी एक्सप्रेस करते हैं वो इन वोकल ऑर्गन्स की हेल्प से एक्सप्रेस करते हैं, लाइक लैरिंग्स, टंग्स, लिप्स, टीथ एंड हार्ड पैलेट। इसमें जब भी हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो इसमें एयर फ्लो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होता है, एज इट इज़ प्रोड्यूस विदाउट फ्रिक्शन ऑफ द 20 वाउल साउंड्स। 20 वाउल साउंड्स हैं, 12 आर प्योर वाउल साउंड्स और सिंगल साउंड एंड आर कॉल्ड monophthongs, which 8 are vowel glides from our initial sounds to a final sound and are called diphthongs. There are three types. Front. A front vowel is that during the protection of which there are three types. फ्रंट वाउल होता है, इसमें जो साउंड का प्रोटेक्शन होता है, इसमें जो टंग होती है वो हार्ड पैलेट के डायरेक्शन में रेज करती है। देन सेंट्रल। अ सेंट्रल इज दैट during the production which the center of the tongue is raised toward the roof of the mouth। इसमें जो टंग होती है वो माउथ के रूफ के टुवार्ड्स उसका डायरेक्शन रहता है, विच लाइज एट द मीटिंग पॉइंट ऑफ हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। Here you see in this diagram, this is hard palate and this is soft palate। इन सेंट्रल वाउल में जो हमारी टंग जो रेस करती है वो हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट के डायरेक्शन में रेस करती है। As you see in this picture, this is hard palate and this is soft palate। Is that during the production of which the back of tongue is raised in the direction of soft palate। इसमें जो टंग की डायरेक्शन होती है वो सॉफ्ट पैलेट के डायरेक्शन में रेस करती है।
And diphthongs is a combination of two pure vowel sounds which change its quality in a syllable. These are diphthongs and their example. Consonant vowels are the sounds which are produced with obstruction of air. मीन जब इसको बोलते हैं तो उसका साउंड होता है उसमें एयर फ्लो डिस्टर्ब होती है. So these are 24 consonant sound in which English according to the RP of England and production of them involves some friction. They are given below the examples. Three term table. Usually consonant sound can be described in terms of the following. First, place of articulation. Second, manner of articulation. Third, voice of articulation. The pace of articulation. This refers the articulation involved in the production of particular sound. Particular sound का जो production होता है. So these are divided into 8 parts. Bilabial, labiodentals, dental, alveopalatal, palatal, velar sound, glottal. Then second point is the manner of articulation. This refers to a sound is production and the way in which the air stream is. 7 types. First, plosive. Second, fricative, affricate, nasal, approximate, lateral, and glides. Then last point, voice of articulation. The voice of articulation divide into two voiced or non-voiced and a voiceless. Then experiment 2, objective pronunciation. Importance of pronunciation. In order to speak correct English, pronunciation should be used correctly. So pronunciation हमें हमेशा correctly बोलना चाहिए. By using carefully speech habits in speech. Simple mistakes can be avoided. Learning appropriate pronunciation techniques gives one the confidence to avoid common error in speech. And second point is the distinction between letters and sound. Sound और letter में क्या distinction होता है? So एक conscious systematic effort होता है will therefore be needed to acquire good pronunciation and to make one's own speech intelligible to the other. So साउंड और लेटर में क्या डिस्टिंगाइज होता है जो कि इंडियन स्टूडेंट्स को बहुत ज़रूरी है समझना. द इंग्लिश वर्ड नेक्स्ट फॉर एग्जांपल हैज़ 4 letters N, E, X and T, but it has 5 sounds such as N, E, K, S and T. Next. Next. जैसे कि हम अवेयर हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 letters होते हैं बट 44 distinct sounds होते हैं. फॉर एग्जाम्पल द कॉन्सोनेंट साउंड K is represented by different spellings as given below. This is like sound K, letters K, words kind. C letter है but sound है call. And double C and word accord.
Different sounds are represented by consonant letters ch in different words as given below. Letter ch sound k, ch, sh. Words like chemistry, bench, cha, machine. Similarly, the vowel sound. Similarly, the vowel A is represented by many sounds. Letter A, H, banana, mat, chalk. Further, some letters do not represent any sound. These are silent letters. Silent letter B, C, D, P for Tom. Word storm. C, ack, rack. D sound Wednesday. Not a mostly mostly people pronounce this as Wednesday, but it is incorrect. The correct pronunciation is Wednesday. P. So we pronounce this psychology. T. Catch. T. No. L. Talk. Another interesting feature of English language is that often we would find a letter or a group of letters representing different sounds but no indication graphically. Letters GS love words rough enough sound for X examine Z exa Z ZZ box. इसमें कुछ ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं जो डिफरेंट साउंड रिप्रेजेंट करते हैं बट उनका कोई ग्राफिकली इंडिकेशन नहीं होता है. Past tense makers. The suffix ed is used for making past and participate forms. Suffix mean जो वर्ड के एंड में हम ऐड करते हैं. These suffixes are also represented by the letter D or the letter ed. These suffixes are called inflectional suffix. The inflectional suffixes are pronounced as t, d, it. It has following rules. Loved, played, carried, and id sound pronounced as hanged, ranked, mounted, loaded, wanted. First, the inflectional suffix SOES are pronounced as s, z, and is. Just like eats, cooks, cakes, months. Z sound, bags, boards, calls, cities. Wherever the plural makers as called S or ES fall immediately after the six siblings. आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल.